In my first video, I have already discussed 25 questions. मैंने मेरे पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है. ಈ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now I move towards 26 questions. The saliva helps in digestion of. लारा किसके पाचन में मदद करता है? लारा ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ डाइजेशन ಆಗಲಿಕ್ಕೆ लारा ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? हेल्प ಮಾಡುತ್ತೆ. लारा हेल्प किया जाता है फॉर स्टार्च डाइजेशन. 27 क्वेश्चन को अब मैं आता हूं. 27 क्वेश्चन में प्रश्न ये है, शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू कम दर्शकता की वजह है शिफ्टिंग ऑफ द इरिस, वीकर मसल्स, alignation of eyeballs, weakening of the retina. आंख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलिका का बढ़ना, रेटिना का कमजोर होना. द राइट आंसर इज वीकनेस ऑफ द रेटिना. रेटिना का कमजोर होने से कम दर्शकता की वजह है. The weight of an average human male brain is about. एक व्यक्ति पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ದೀಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ कैन गिव यू द आंसर. इफ ऑलरेडी नो द आंसर, आपको पहले से ही उसका पता है ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना है, पर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, तकलीफ होता है. इसके लिए आपको ये दो वर्डों को आपको याद में रखना होगा. क्या क्या दो वर्ड है? वो वेट और एक ब्रेन. आपको दोनों पढ़ते हुए आपको मालूम होगा ह्यूमन ब्रेन कितना वजन रहता है. कितना वजन रहता है कि 1350 grams. It is the weight of the human brain. Next question, water has maximum density at. पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा? It is in 4 degrees Celsius. Which of the following disease usually spreads through air? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡತಕ್ಕಂತ ರೋಗ ಯಾವುದು? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡತಕ್ಕಂತ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ डिसीज एंड एयर. दीज टू वर्ड्स कैन गिव यू आंसर. आपको क्या मालूम पड़ना है? रोग और हवा, ये दोनों शब्द को आप आपके माइंड में रखो. आपको क्या आंसर आएगा? इसके लिए ये आपको मालूम होगा, प्लेग तो हवा में नहीं, टाइफाइड तो हवा में नहीं फैलता. ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, ये क्या होता है? इट इज कम्स फ्रॉम एयर. फैलता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम एयर. हवा के माध्यम से ये फैलता है. द राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस. The ozone layer in the upper part of the atmosphere protects us from. वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा आयोजन परत हमें किससे बचाती है? The ozone layer, visible radiations, infrared rays, ultraviolet rays, cosmic rays. The right answer is ultraviolet rays. Now moves to 32 questions. Aviation fuel for jet aeroplanes consists of purified. हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है. ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ that is kerosene. मिट्टी तेल हम कहते हैं उसको. केरोसिन को शुद्ध ईंधन के द्वारा पर जेट विमान में, हवाई विमान में
उसको यूज करता है। Which of the following is not a gland? Which of the following it is not a gland? Stomach, liver, kidney, pancreas. I show you one picture about the human glands. Just I show you one of the picture about the human glands. Wait for a minute. आपको मैं मानव देह का एक पिक्चर दिखाता हूं, उसमें all parts of the all glands of the human is there. Just you see that picture, then you can easily identify the major glands. Here is the picture. Just you see it. Just you see it. Here is the picture. Pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, ovaries, testes. These are the main glands in the human body. Now we have to consider which of the following is not a gland. Here, liver is a gland. Next, kidney is a gland. Pancreas is a gland. Pachak Granthi, Gurd, Jigar. These तीन are called as a gland. बट स्टोमैच पेट को हम क्या नहीं कहते हैं, ग्लैंड नहीं कहते हैं. इसके लिए राइट आंसर इज स्टोमैच. लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय. ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसह्य बनाया जा सकती है? विजिबल लाइट, प्रकाश, एक्सरे, इंफ्रारेड रेज, ultraviolet rays. The right answer of the question visible light. प्रकाश से long distance photography is facilitated. In fireworks, the green flame is produced because of. पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? The right answer is barium. The right answer is barium. Area of rectangular ground is 12,500 meter square. Its length is 200 meter. Its parameter is. एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर वर्ग है. उसकी लंबाई 125 मीटर है, तो उसका परिधि क्या होगी? We have to परिधि is equal to long. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ, ಸುತ್ತಳತೆ is equal to ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12,500 ಮೀಟರ್ ಫರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He is given 12,500 area is equal to 125 meter length and agala. What is that? Now we can move towards 100 into agala paridhi is equal to 2 udda into agala. No, I am not getting it, this one. Just I make it. Just go through. The right answer is 450 meter. Right answer is 450 meter. Next, I move towards 39th question. If 10, 20
10, 20x and 40 are in a appropriate proportion, the value of x will be, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए. Here we have to write this one like 10, 20 x 40 10 into 40, 20 into x. 10 into 40, 20 into x. 400 is equal to 20x. X is equal to 400 divided by 20. Answer is 20. Answer is 20. The right answer is 20. If 10th January 2004 is Tuesday, what will be the day on 10th January 2005? यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा? 2004 ಮಂಗಳವಾರ 10ನೇ ತಾರೀಕಾದರೆ 2005 ಜನವರಿ 10 ಯಾವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. हम इस प्रश्न को पहले ये जरूरी है कि 2004 ये लीप ईयर है क्या नहीं. यस, इट इज अ लीप ईयर. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस लीप ईयर? हम उसको 4 से डिवाइडेड करा तो डिवाइडेड 2004 फ्रॉम 4 वी कैन गेट 501. That's called, it is a leap year. In leap year, we all of know there is a 360 days. We have to divide it from 7. 7 1 7, 7 5 1 6, 7 2 2 is remaining. If count with the 2, 2 is a day, Wednesday, Thursday is the right answer. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 365 ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ? 366 ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ. 2004 ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಶೇಷ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2004ನ್ನ 4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 501 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2004ರಿಂದ 2005ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ? 366 ದಿನಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ 366ರಿಂದ 7, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು, 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 52 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಶೇಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಷವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ. Like this, keep in your mind, the right answer is Thursday. A cyclist cover 12 kilometers in an hour. What is in his speed in meters per minute? एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसका स्पीड मीटर मिनट के क्या होगा? 1 घंटा का मतलब है आपको जरूरी आपकी ये माइंड में रखना होगा. 1 घंटा का मतलब है 60 मिनट. 1 घंटा का मतलब है 60 मिनट. 12 किलोमीटर का मतलब है 12,000, 12,000 मीटर. 12,000 मीटर. अगर here 200 meter per minute, 200 meter per minute.
एक ऐसा होता है, अगर एक आदमी 1 मिनट को 200 मीटर गया तो 60 मिनट को वो 1200 मीटर को जाता है। इट इज द राइट आंसर, इट इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर घंटे का गति किससे बराबर है? 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। 1 घंटा बोले तो 300 600 सेकेंड्स, सॉरी 3600 ये इसको सही लगता है। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, 1 आवर का मतलब है 36,000, sorry 3600 seconds. This is the right answer. Now we have to move towards the cost of 8 bananas at the rate of Rs 4 per dozen will be. ये 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 डजन का मूल्य 4 ರೂಪಾಯಿ है। ಒಂದು ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 18 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ 12 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ। टोटल अमाउंट इज 6 रुपीज। यदि आपने 12 किलो के लिए 4 रुपए दिए तो 6 किलो के लिए आप क्या देते हैं? 2 रुपए देते हैं। इसके लिए 18 बालन को 4 रुपए और 2 रुपए मिला के 6 रुपए होता है। द राइट आंसर इज 6 rupees. If we use the 12 bananas to 4 rupees, then 6 bananas to give 2 rupees. Total 8 bananas, total rupees is 6 rupees. 42 questions. Next we move towards 40. 12 men and 12 women can refilled in 14 days. 8 men and 16 women can reap the same field in 12 पुरुष और 18 महिला एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं। तो बताए कि 8 पुरुष और 16 महिला उसी खेत को कटाई में कितनी समय होगी? 8 ಪುರುಷರು 18 ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಹೊಲದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 14 ದಿನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 8 ಪುರುಷರು 16 ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಗಂಡು, 1 man is equal to 18 divided by 12 women. 8 men is equal to 18 divided by 12 into 8. 4 2 4 3 3 1 3 6 12. 8 men is equal to 12 women. 8 men is equal to 12 women. 18 women, 14 days, 1 woman, 14 into 12 days. Therefore, 16 plus 12.
16 plus 12 is equal to 14 into 12 divided by 28, 9 days. The answer is 9 days. Next, moves towards the average of the height of 5 students having height 30, 40, 50, 60, 70. पाए क्षेत्र छात्रों की औसत लंबाई का क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70। पहले आपको ये 5 लंबाई को ऐड करना होगा 30, 40, 50, 60, 70, 13, 18, 22, 250, total 250. 250 divided by 5. Answer is 50. The right answer is 50. B is the right answer. Next question. At what rate percentage per annum will be sum of money double in 8 years? 12%, 5, 25%. प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी? आपको दुगनी होने के लिए 12%, 12.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8 साल के लिए। A man buys a tie for 1,000 and sells it for 1,500. His gain percentage. एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपए में खरीद लेता है और उसे 1,500 रुपए में बेचता है तो उसकी कितनी प्रतिशत का लाभ होगा? यहाँ उसने 1,000 को खरीद लिया है, 1,500 को बेच दिया है, टोटल लाभ है 500 रुपीज। 1,500 rupees means 50%. The right answer is 50%. The next question is 46. 3 hours and 40 minutes seconds. He is asking 3 घंटे और 40 मिनट का सेकेंड्स कितना होता है? आपको मालूम होगा 3 घंटा मीन्स 60 into 3. 60 into 3 में 1 घंटे को 60 मिनट्स, 3 घंटे को टोटल 180 मिनट्स। 180 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, 5, 12, 225 minutes, total 225 minutes into 60, into 60. 6 to 5 is the 30, 6 to the 12 and 15, 6 to the 12 and 13. Answer it is 13,500. पहले आपको क्या करना होगा? 3 घंटे को 3 घंटे बोले तो 180 मिनट्स प्लस उसको 40 मिनट को 45 मिनट्स को ऐड करना होगा, टोटल 225 मिनट्स। टोटल 225 मिनट्स को 1 मिनट को 60 सेकेंड, इसके लिए 225 into 60 किया तो आंसर आता है 13,500. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30% of 140 is equal to x of 240. Then x is, the right answer is 5. Which one of the following is the equivalent 6 divided by 26? निम्नलिखितों में से कौन 6 divided by 20 के बराबर है? The right answer is 30%. यदि 20 को 6 के हिस्से में हम बांट देता है, हमको क्या आता है? उसमें 3 आता है, इसके लिए 30% हम इसको कहते हैं। The square root of 4,906 by means of factors 4,006 का वर्गमूल है। हम आपको 1 से 30 तक वर्गमूल को याद रखना होगा। इधर एक एक को आप
इंटू करके भी क्या कर सकता है, वर्गमूल को निकाल सकता है। 64 into 64, it is the 4906. Right answer is 64. The last question, LCM 2 into 3 into 5 and 3 into 5 into 7 is equal to आपको क्या करना होगा, पहले 2 3 5 ऑलरेडी 3 5 आ गया है, इसके लिए 7 डालता हूँ। 2 into 5, 2 into 3 6, 6 into 5 30, 30 into 7 210. It is the right answer. It is the right answer. मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। पहले वीडियो में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मेरा अगले वीडियो में फिर एक बार 2021 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो if you like my videos, comment in the comment box. Otherwise you don't like my videos, you also comment in the box, don't do the videos. I can't do the videos. If you want, if you take this benefit of this video, if you it is helps to you to go to the Indian Army, then I can do support you. I can do my videos. I wanted to do 3 more videos, 2021, 2019, 2018 question paper. If you like this video, please share to everyone and subscribe my channel. यदि आपको मेरा ये प्रयत्न अच्छी लगी तो मुझको सपोर्ट कीजिए, मेरा ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕರೆ, मेरा ಚಾನೆಲ್ को ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರೆ. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.